Good morning students, welcome to Chaitanya Mathematics Academy classes. Now this one is intermediate first year 1B paper pair of straight lines chapter LAQs. Okay, fourth chapter pair of straight lines LAQs. First question, show that the lines joining the origin to the points of intersection of the curve x square minus xy plus y square plus 3x plus 3y minus 2 equal to 0 and the straight line x minus y minus root 2 equals to 0 are mutually perpendicular. You have to show that the lines are mutually perpendicular. Okay, show that the lines joining the origin. सो ये जॉइनिंग द ऑरिजिन बोल के अपने को क्वेश्चन में दिखे समझो, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं अपन वो प्रोसेस यूज करना. ओके, शो दैट द लाइंस जॉइनिंग द ऑरिजिन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, फर्स्ट द कर्व इज द गिवन कर्व. द गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई plus y square plus 3x plus 3y minus 2 equals to 0. Let the given curve equation equals to equation number 1. Okay, next the line equation, the given line and the straight line. The given straight line or given line is x minus y minus root 2 equals to 0. Okay, so the given line is x minus y minus root 2 equals to 0. Just to simplify this equation, x minus y equals to constant to the right side, minus root 2 become plus root 2, right? So right side में constant रहना, left side में x term y term. Okay, so x minus y, right side there is no constant, means send the right side, send the constant from the left side to the right side. Okay, minus root 2 become plus root 2. Just think root 2 means root 2 into 1. Just think root 2 means root 2 into 1 समझो इसको. So x minus y into root 2 become divide root 2 equals to remaining is 1. Let equation number 2. क्लियर, क्या करें, कांस्टेंट को राइट साइड में लिए एंड इनटू 1 समझे तो वो रूट 2 मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड में आए तो डिविजिबल हो जाता. ओके, नॉर्मल प्लस रूट 2 समझो, इनटू 1 नहीं समझे तो प्लस रूट 2 बिकम माइनस रूट 2 हो जाता. इसलिए क्या करें अपन, इनटू 1 सोचे तो into root 2 become divide root 2, means x minus y by root 2 equals to 1, means we have the one value, means 1 is the value of x minus y by root 2. Now homogeneate equation number 1, homogeneate the equation 1 with respect to or with the help of with respect to equation 2. क्लियर, इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं अपन, होमोजीनिएट कर रहे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2. ओके, होमोजीनिएट द इक्वेशन नंबर 1 with respect to equation 2 or with the help of equation 2. So homogeneate बोले, homogeneate का मतलब क्या है, जो कर्व इक्वेशन है इक्वेशन 1 को बोले ना, इक्वेशन 1 एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर टर्म एज इट इज, then minus xy as it is, and then plus y square also as it is. Okay, and x term means plus 3x, x term let into 1 and y term into 1, 3y into 1 and constant minus 2 into 1 square. right, ये homogeneate का process है. homogeneate बोलो तो क्या करे, it is x square term, it is xy term, it is y square term, it is x term, it is y term, it is constant. Okay, x square term, xy term, y square term, x term, y term and constant. Okay, so x square term as it is, xy term as it is, y square term as it is. Multiply the x term into 1, multiply the y term into 1, multiply the constant into 1 square. X term whatever may be multiply with 1, y term whatever may be multiply with 1, constant whatever may be multiply with 1 square. होमोजीनिएट का मीनिंग क्या है, x टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, y टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना. ये जो 1 से मल्टीप्लाई करे ना, ये 1 के जगह पे क्या लिखना, 1 इज द वैल्यू ऑफ
x माइनस वाई बाई रूट टू। मीन्स जहाँ पे ब्रैकेट में अपन 1 लिखे वो 1 के जगह पे क्या लिखना अपन x माइनस वाई बाई रूट टू सब्स्टिट्यूट करना। ओके राइट। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स वाई एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज 3x into 1. What is the 1 value? 1 is equals to x minus y by root 2. Okay, x minus y by root 2. X term completed. Then plus 3y into again 1 value x minus y by root 2. Next minus 2 into 1 square means x minus y by root 2 to the whole square equals to 0. Clear? Homogeneous means x term into 1, y term into 1, constant into 1 square, and one value is x minus y by square root 2. Okay, right. So see, x square minus xy plus y square plus 3x into x, 3x square minus 3x into y, 3xy by square root 2 as it is. Then plus 3y into x, 3yx or 3xy minus 3y into y, 3y square by square root 2, and minus 2 into x, sorry, 2 into a minus b whole square. Whole square is there, means numerator to the square and denominator to the square. So numerator to the square means x is a square means x square plus b square means y square minus 2ab means minus 2xy. Numerator to the square completed. Denominator to the square means square root 2 to the square. Square root 2 to the square means 2. ओके, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर करो तो क्या होता, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, रिमेनिंग 2 रहता. ओके, सो 2 कैंसिल. Clear? See, there is no denominator, there is no denominator, there is no denominator. Here also there is no denominator, means LCM is square root of 2. Okay, so LCM is square root of 2. Clear? LCM is square root of 2. There is no denominator means multiply with LCM. Root 2 into x square. Okay, and this one also same, root 2 into xy plus square root 2 into y square. There is no denominator means multiply with LCM. Okay, and denominator LCM same means numerator as it is, means plus 3x square minus 3xy. Here also denominator LCM same means numerator as it is, means plus 3xy minus 3y square. Right? Here also, here there is no denominator means multiply with root 2. Okay, square root 2 means minus x square means minus root 2 into x square, root 2 into x square, minus into plus minus square root 2 into y square. Okay, then minus into minus plus. Okay, 2 into root 2, 2 root 2 xy equals to 0. Here? Okay, then next. So first x square term, root 2 x square, 3x square. See, plus root 2 x square minus square root 2 x square plus square root 2 y square minus square root 2 y square. Okay, cancel. Next, plus, right, see, xy term plus 3xy minus 3xy cancel. Okay, and first x square, here one more x square term remaining, 3x square, then xy term means see, 2 root 2 xy minus 1 root 2 xy. वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, means 2 root 2 xy minus 1 root 2 xy means remaining 1 root 2 xy. Okay, then y square term is minus 3y square. Okay, denominator become multiply, square root 2 into 0 means 0. Clear? See once again, x square term as it is and y square term also as it is. Remaining xy term 2 root 2 xy minus 1 root 2 xy. 2 minus 1 means 1. So 1 root 2 xy. So it is in the form of, it is in the form of
in the form of ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Okay, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. What is x square coefficient? Therefore, what is x square coefficient? A means in this x square coefficient 3 means a equal to 3. 2h equals to xy coefficient is 2h, xy coefficient is root 2. So 2h equals to root 2. Y square coefficient is b. In this y square coefficient is minus 3. Okay, we have to show that the curve and the straight line are mutually perpendicular. Mutually perpendicular condition is a plus b equals to 0. If we can prove answer a plus b is equals to 0, then we can say the curve intersection of the curve and the straight lines are mutually perpendicular बोल के लिख सकते. Okay, so a plus b find out करना. So a plus b equals to what is a value? 3 and plus and b, what is b value? Minus 3. So plus into minus, minus 3 minus 3 value 0. Therefore a plus b is the equals to answer 0. So a plus b equal to 0 means the lines joining the origin to the points of intersection. Therefore the lines joining the point, the lines joining the origin to the points of intersection of the curve and the straight line are mutually perpendicular. Okay, so therefore here I am writing the lines joining the origin to the points of the intersection of the curve and the straight line are mutually perpendicular. So the lines are mutually perpendicular. Mutually perpendicular symbol लिख रहा हूँ मैं, right? Clear? Okay. So let the curve equation number 1, let the equation 1 value find out करने के बाद equation 2 लेना, homogeneate the equation 1 with the help of or with the respective equation 2. X term को 1 से multiply करना, y term को 1 से multiply करना, constant को 1 square से, right? Equation completed means it is in the form of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. If we can prove a plus b equal to 0, a plus b means 3 minus 3 is 0, means if a plus b equal to 0, then the lines are mutually perpendicular. What are the lines? The lines joining the origin to the points of intersection of the curve and the straight line are mutually perpendicular. So simply क्या लिखा मैं? Simply the lines are mutually perpendicular. Clear? This is the first long question of pair of straight line. Next question. First problem completed. Right. Now the second problem is find the values of k if the lines joining the origin to the points of intersection of the curve 2x square minus 2xy plus 3y square plus 2x minus y minus 1 equal to 0 and the line x plus 2y equal to k are mutually perpendicular. Previous problem, ये problem same है, but previous problem में show that the lines are mutually perpendicular पूछे. इसमें if the lines are mutually perpendicular then find the value of k. राइट. सो प्रीवियस प्रॉब्लम में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करने को बोले, इसलिए a प्लस बी का आंसर अपन क्या लाए? आंसर 0. a प्लस बी इक्वल टू 0 लाया तो 0 हुआ तो क्या होता? वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. प्रीवियस प्रॉब्लम में लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल के प्रूव करना है, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 0 प्रूव करें. राइट. इसमें ऑलरेडी द गिवन लाइन्स आर ऑलरेडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर given, means we can use this condition, means let a plus b equal to 0. right. प्रूव करना बोले तो, शो दैट करना बोले तो आंसर 0 लाना. ऑलरेडी द लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर means a plus b equal to 0 we can use as a condition. okay. right. So means a plus b equal to 0 लेना बोले तो a वैल्यू होना, b वैल्यू होना. a वैल्यू b वैल्यू होना बोले तो a वैल्यू b वैल्यू कहाँ से आता? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आता. मीन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन आया तो उसमें से x स्क्वायर कोएफिशिएंट कैन बी टेकन एज a, y स्क्वायर कोएफिशिएंट कैन बी टेकन एज b. राइट. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन, द गिवन कर्व, सेम एज इट इज प्रॉब्लम. The given curve, process as it is, the given curve 2x square minus 2xy plus
3y square plus 2x minus y minus 1 equals to 0. Let equation number 1. So given curve equation completed, and the given line is x plus 2y equals to k. प्रीवियस प्रॉब्लम में लेफ्ट साइड में कांस्टेंट दिए, सो फर्स्ट अपन क्या करें, उसमें लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट था राइट साइड में लिखे, उसको क्या करें इनटू 1 समझे, बट इसमें ऑलरेडी कांस्टेंट राइट साइड में दिए, जस्ट इनटू 1 समझे तो अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते. सो x प्लस 2y into k become divide, means x plus 2y by k equals to 1. Let equation number 2. Right, now in this problem one value is x plus 2y by k. Okay, now next the condition is homogeneate equation number 1. Homogeneate equation 1 with the help of or with respect to equation 2. क्लियर, इक्वेशन 2 के हेल्प से इक्वेशन 1 को होमोजीनिएट करना है. ओके, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के हेल्प से अपन क्या करना, उसको होमोजीनिएट. बट होमोजीनिएट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनिएट. होमोजीनिएट करना बोले तो क्या करना, x टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, y टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से, मीन्स x स्क्वायर टर्म सेम लिखना, xy टर्म सेम लिखना, y स्क्वायर टर्म भी सेम लिखना. व्हाट इज द x स्क्वायर टर्म, 2x square as it is. What is xy term, minus 2xy as it is, and y square term is 3y square, and x term into 1, y term into 1, constant into 1 square. X term means 2x, x term into 1, y term into 1, constant 1, 1 into 1 square. प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पे 2 था, 2 इंटू 1 स्क्वायर. नाउ इस ये प्रॉब्लम में 1 है, सो 1 इंटू 1 स्क्वायर. ओके, एक्स टर्म इंटू 1, वाई टर्म इंटू 1, कांस्टेंट इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. क्लियर, ये 1 के जगह पे x प्लस 2y बाई के, ये 1 के जगह पे x प्लस 2y बाई के, ये 1 के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना. ये 1 क्वेश्चन में के कांस्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना. ये 1 क्वेश्चन में दिए सो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट जो भी है वो एज इट इज रहता, व्हाट एवर मे बी 1 2 3 4. प्रीवियस प्रॉब्लम में 2 था, ये प्रॉब्लम में 1 है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहता, बट अंदर जो 1 सब्स्टिट्यूट करे अपन, वो 1 के प्लेस में क्या करना, x प्लस 2y बाई के. बट ये 1 क्वेश्चन में दिए सो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिए सो कांस्टेंट एज इट इज लिखना. ओके, नाउ 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर plus 2x into 1. What is the value of 1? X plus 2y by k. Next minus y into 1. 1 means x plus 2y by k, and minus 1 as it is. क्वेश्चन में का कांस्टेंट है वो, ये 1 के जगह पे सेम x plus 2y by k to the whole square equals to 0. Clear? Now simplification. Okay, so 2x square as it is, and minus 2xy as it is, and plus 3y square as it is, plus 2x into x, 2x square, 2x into 2y, 4xy by denominator k as it is, then minus y into x, yx or xy, minus into plus minus y into 2y, 2y square by k. Next minus of 1 into means nothing, 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता, सेम आता, सो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. राइट, न्यूमरेटर a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर एंड y स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 into 2, 4xy, 2ab by denominator to the square, numerator to the square होगा. next denominator to the square means k to the square. See, there is no denominator means 1, there is no denominator means 1, there is no denominator means 1. what is the LCM? k square. हाईएस्ट जो है वो LCM ले लेते हैं अपन. ओके, so that means LCM is k square equals to 0. clear?
राइट, ये दिख रहा कीबोर्ड? Okay, right. So k square equal to 0. See, there is no denominator, means direct multiply with LCM. K square into 2x square, next k square into minus 2xy, next k square into 3y square. Because there is no denominator, means direct multiply with LCM, right? K square into x square means 2x square k square. Okay, then second one also minus 2xy into k square, right? Next to 3y square into k square, 3y square into k square. Clear? Here k is there, but LCM k square means one k is missing. Okay, LCM क्या है? k square है, but यहाँ पे k है बोले तो one k है और एक k मिस होगा, वो मिस हुआ तो k से मल्टीप्लाई करना, राइट? 2x square into k, 2x square into k, next 4xy into k. Okay, 4xy into k, 4xy k. Clear? And there is, in this also k is missing, means minus xy k. Okay, minus 2y square k, minus 2y square k. Next यहाँ पे denominator k square, LCM is k square, means same numerator as it is. Okay, right. थोड़ा यहाँ तक लेके बोर्ड में दिख रहा कि नहीं, कि एक बार सेट कर लेते, ये लिखे. सो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 4y स्क्वायर. ओके, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 4xy. थोड़ा बोर्ड सेट कर तो याद दिख रहे कि नहीं कि right. Okay, now x square term. So x square term, what is the x square term? x square term लिखना बोलते x square कॉमन निकालना, राइट? x square कॉमन निकाला तो देखो यहाँ पे in this there is x square means 2k square, x square is the common, and in this also x square is the common, means 2k, and in this also x square common, means x square common means minus 1 is there, x square common completed. Clear? X square common completed, right? Next xy common. Xy common means in this, xy common means minus 2k square, minus 2k square. Okay, and xy common, in this xy common, see, okay, xy common means plus. ओके, फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे अपन, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद कॉमन निकालेंगे. राइट, सो फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके कॉमन निकालेंगे. फर्स्ट एक्स स्क्वायर टर्म सेम लिखो, 2x स्क्वायर k स्क्वायर एंड माइनस 2xy k स्क्वायर प्लस 3y square k square plus 2x square k and plus 4xyk minus xyk means 3xyk. Okay, 4xyk minus xyk, 4 minus 1 means 3, and remaining total as it is, minus 2y square k minus x square minus 4y square minus 4xy, denominator k square become into k square into 0 means 0. Okay, now let x square is the common, in this x square means x square common means remaining 2k square. Okay, and in this x square means x square common means remaining 2k, and कहाँ पे है, यहाँ पे x square common means minus 1 of x square. Okay, x square common completed. Next xy common, in this xy is there means minus 2k square. xy common निकाले तो वहाँ पे क्या रिमेनिंग है, minus 2k square, and यहाँ पे xy है, so xy common निकाले तो 3k, and xy यहाँ पे, so xy common निकाले तो minus 4 of xy. Clear? xy common completed. x square xy, next y square. Y square common means what is the y square? In this y square means y square common means 3k square. Okay, and y square कहाँ पे, यहाँ पे, y square common means minus 2k. Okay, and in this y square is common means minus 4 into y square equal to
0. Clear? X square term, xy term and constant. Okay, so it is in the form of ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. So अपने को कौन सा वैल्यूज होना, खाली a वैल्यू होना, b वैल्यू. We need a value and b value. X square coefficient a, here x square coefficient this one, means compare the x square coefficient a. X square coefficient is 2k square plus 2k minus 1 is the a value, and b value, what is b value? Y square coefficient means 3k square minus 2k minus 4. Clear? A b value completed. Given that the lines are mutually perpendicular, the lines of intersection lines are mutually perpendicular. Shortcut में लिख दे रहा हूँ. Given that the lines are mutually perpendicular. So already perpendicular given, mutually perpendicular. Already given means we can use the condition, that is a plus b equals to 0. Okay, that is a plus b equal to 0. What is the a value? That implies a value is 2k square plus 2k minus 1 plus b. B value is 2k square minus 2k minus 4 equals to 0. Substitution of a value, substitution of b value completed. Okay, see, plus 2k minus 2k cancel. Okay, plus 2k minus 2k get cancelled. Okay, 2k square plus 3k square means 5k square, and minus 1 minus 4 minus 5 equals to 0. Okay, so 5k square equals to minus 5 become plus 5. See, k square equals to 5 divisible, multiply 5 become divisible, means 5 ones are 5 ones are, means k equals to, that is k square equals to 1. K square equals to 1 means k value is equals to, square निकाल दिए तो रूट लिखना पड़ता है, रूट 1 वैल्यू माइन प्लस और माइन रूट 1 वैल्यू 1 means k equals to plus or minus 1. So the lines are mutually perpendicular means we can use the condition a plus b equal to 0, a value, b value equal to 0. K term get cancelled and 2k square, 3k square, 5k square, minus 1 minus 4 minus 5 equal to 5 means 5 cancel means k square equal to 1 means k equal to root 1. K equals to root 1 means k equals to plus or minus 1, plus or minus root 1. Okay, नहीं तो डायरेक्ट k equal to plus or minus 1 लिखे तो भी चलता. Okay, k value is plus or minus 1. Clear? So this is the problem of second one. Okay, कौन सा value है? Second value. So k equal to value completed. This is the long question of pair of straight line chapter. Okay, next question. Okay, next question previous next class में बोलेंगे. Okay, 2 problems completed of pair of straight line chapter long questions. Okay, right. If you like the class, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर करिए, अगर चैनल में नया आया है तो सब्सक्राइब कीजिए. Okay, thank you.